Okay. So, uh, what we'll understand today is what kind of project structure I want. Right. So, in this project structure, we'll create two modules. One is, you can say, an admin module. Right. What would happen in admin module is that you would be uh, say creating all your, or entering all your data in admin module, and one we would call a user module, in which there will be one component in which you will be able to uh, create or view your resume. Right, that is what we are say going to do today. Right, it is pretty simple thing to do. Right, now let us see. In the admin module we'll have different components. One is to say, or what I can say is, one component each for each this thing, each section. That's what we would have. Right, so let me create module first. How will I create a module? Right, I'll say ng generate module, and I'll call it admin. This is one module. Then I'll have ng generate module, and I'll call it user. Right. Then I'll have a component. I'll say ng generate component, and I'll call it uh, say admin component. Or I'll call it admin itself instead of. I'll create another component which would be user. Right, now, one important thing to note is that the two components which I have created, admin as well as user, right, these components I have created in the app module itself. Right, that's what we have done. Right. And what we'll do is that we would redirect ourselves to the components of other modules via these components. The reason I am doing this is that if I do everything in say app component.ts, what might happen is that whatever code, if we need to write some code in app component.html, that would be displayed. So a better thing to do is create component, right, and route it via that component. So whenever you go to that route, right, from that you will be able to see uh, your components, right, your specific module wala code. Now let's see uh, how to do that. I'll go to src, I'll go to app, right, then I'll go to admin, or first I'll go to user, right, and inside user, what I do is generate a component. Now this one would be specific to our user module. Now what does our user module contain? Our user module should only contain your resume, right? So I would create a component called as resume. So I'll say ng generate component resume. That's what I would say. Right. So my user component is created in the user module. Then I'll do a dot dot. I'll go to admin. Now in admin, right, let us try and understand what are different things that we are putting in resume. So I'll say ng generate component, and my first component would be say personal. Right, so this would contain all my personal details, like say name, first name, last name, then email and mobile number. Right, ये सारी चीजें हम लोग रखेंगे ये कंपोनेंट में, उससे ज्यादा नहीं रखते. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर, एंड मे बी कॉलेज नेम, राइट, या कॉलेज नेम हम लोग एकेडमिक्स में कर देते हैं. सो आई क्रिएट अनदर component I'll call as academics.
So we have ng generate component academics. So we created a component for academics. Then one component would be for projects. So I'll have ng generate component projects. So in this project component, we would have a mechanism to create new projects. Create means add projects to our resume, right? Then I'll have ng generate component hobbies. Then this will have mechanism to add, edit, update, delete hobbies, right? Then I'll have another component ng generate component. और क्या रहता है? Achievements. That is the component I have created for achievement. And any other component और कोई component रहता है क्या? कोई रहेगा? So if I have missed any skills. राइट, तो ये मेरे सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और कोई जो मिस हुआ? ठीक है, इतना ही है। So what I'll do is, let us go in our code. Right, so if we can see, we have admin में इतने सारे and user उसमें इतने सारे. Right, now let us go to our app.module.ts and create routes for them. What I'll do is I'll say import router module comma routes from @angular/router. This is the first thing. Then I'll say where routes colon routes equals to array, right? And inside this array, I'll create different routes. So I'll say path, user, and component. Where is my component? अच्छा, मेरा यूजर कंपोनेंट यूजर मॉड्यूल का ही पार्ट बन गया बिकॉज हमने मॉड्यूल पहले बनाया था. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव दिस यूजर कंपोनेंट फ्रॉम दिस मॉड्यूल. Right, and I'll add it in my app module. And will I'll add it in my declarations array. अगर आप कंपोनेंट बनाते मॉड्यूल के पहले तो ऐसा नहीं होता, राइट? एंड इन कंपोनेंट आई विल से यूजर कंपोनेंट, राइट? सो दिस इज वन पाथ. In the same way, we need to do it for my admin component. So I will remove admin component from here. Right, I'll remove this as well. Right, and I will add it to my app module. I'll say dot /admin component, and I will take the admin component and paste it here. Right. Then I will create a route for that. I will say path admin component. I will say admin component. Right. And then by default, what should we do? Let's go to say user component. Right. Then I would say redirect to
I would say कहाँ जाना चाहिए इसमें, यूजर पे एंड पाथ मैच, right, and here I would say router module dot for root, right, I would say ठीक है। अब ये यूजर कंपोनेंट, ये यूजर के अगेंस्ट हमें चिल्ड्रन भी देने हैं, बिकॉज यूजर के अंदर जाने के बाद इट शुड गो टू उसके चिल्ड्रन। सो आई जस्ट राइट TBD because I do not want to spoon feed you guys. I want you guys to complete it. Right. TBD is add children for user module, right? And here I'll say add children for admin module, right? And what is, I want you guys to create routes or paths in each module. One for route for user module जिसमें वो resume component है, and one for admin module which has some 4-5 components. What I want is, I want you guys to create paths for the same in corresponding components, and right, you should have a children here, right, and those children should ideally go to those particular modules, right? That is what you should have. One thing that you need to do in your user.component.html, you should have a router outlet, right? And same thing in your admin.component.html, you should have a router outlet, right? What it means is कि जो भी वो यूजर पे आएगा उसके चिल्ड्रन जो है वो user.component.html के राउटर आउटलेट के थ्रू होंगे, वेर जो भी एडमिन पाथ पे आएगा उसके जो भी चिल्ड्रन है वो admin.component.html के राउट्स, admin.component.html के थ्रू राउट होंगे। दैट इज व्हाट इट मीन्स। क्लियर है यहां तक? Right now, I stop spoon feeding. I want you guys to scratch your heads and get this thing done. ठीक है, थोड़ा complex है, but I mean it has everything that we have studied till now. अभी तक जो भी हमने किया है उसमें से ही है, राइट? सिर्फ लॉजिक हमने थोड़ा सा चेंज किया है, पाथ वाथ थोड़े से चेंज करे, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। Right, see, if you can see कि by default it writes user component, right? मैं एक यूजर के लिए बना के नहीं, लेकिन मैं नहीं बनाता हूँ, आप खुद ही बनाओ। What you need to do, you need to add routes here, right? ये user.module.ts में add your routes, right? Import it router.file यूज करना, path बनाओ resume component ये यूजर में, right? And user/resume इसके थ्रू का resume component जो है वो दिख जाना चाहिए, right? That is our focus. That's what we should do. ठीक है, कर लेंगे। ऐप मॉड्यूल में कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमें बाकी दो मॉड्यूल में राउटिंग की है। नहीं, उनमें तो राउटिंग की है, ऐप चिल्ड्रन ऐड करने पड़ेंगे जो मैंने यहाँ लिखा है। आ गया ऐप, राइट? क्योंकि यहाँ होगा तो उसका पाथ कैसे आएगा, यूजर स्लैश जो भी पाथ दे रहे हो वो, यहाँ पर एडमिन स्लैश स्किल्स, एडमिन स्लैश पर्सनल, एडमिन स्लैश ये, तो यू विल हैव टू ऐड चिल्ड्रन हियर। चाइल्ड रब्स हमने जैसे करे थे, लेजी लोडिंग,
सर मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया एंगुलर का, उसमें ऐप में एक न्यू फाइल आ गई, ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एच। तुमने राउटिंग को यस किया इसलिए, ठीक है, तो राउटिंग में लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मॉड्यूल को मॉड्यूल में इंपोर्ट करता है, राउटिंग मॉड्यूल को। समझ गए क्या? इज इट क्लियर? ठीक है, सो आई एम नॉट स्पून फीडिंग यू, राइट? सो एकदम क्लियर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, right? Because this is a standard structure which is used in say real angular projects, है ना? तो ये स्ट्रक्चर से we should get used to, ठीक है? तो ट्राइंग दिस थिंग, ये करो और फिर वो कंपोनेंट्स में कुछ करो, यानी व्हाट आई वांट माय टारगेट इज कि आपने वो राउटिंग सही तरीके से करनी चाहिए, दैट इज प्लेन एंड सिंपल टारगेट। ठीक है, एडमिन सेक्शन में क्या होगा? एडमिन में ही तो पूरा तुम्हारा जो रेज्यूमे तुम ऐड करोगे, डेटा जो ऐड करोगे एडमिन के थ्रू ही ऐड करोगे। एनी क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस? फिलहाल क्लियर है, ओके गुड। यूजर मॉड्यूल क्यों बनाया? बिकॉज यूजर मॉड्यूल में हम लोग कंपोनेंट रखेंगे, राइट? और उसमें आपका रेज्यूमे जो है वो दिखेगा, मीन्स आपका पाथ शुड बी यूजर स्लैश रेज्यूमे, राइट? इन विच यू शुड बी एबल टू सी जो रेज्यूमे का डेटा फिल किया है वो पूरा डेटा जो है वो रेज्यूमे में आपको दिखना चाहिए, दैट इज आवर इंटेंशन। करके पता चलेगा, एग्जैक्टली, राइट? इसीलिए ओपन एंडेड रखा है, इसीलिए मैंने सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया या सब कुछ करके नहीं दिखाया। आई वांट यू गाइस टू डू इट। थोड़े से एरर आएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इश्यूज आएंगे, बट दैट इज टू मास्टर राइटिंग। अदरवाइज फिर वो देख देख के करते हैं तो वो हाँ, आज का टास्क राउटिंग है, आज का, कल का, परसों का, 2-3 दिन तो लगेंगे क्योंकि इसमें तुम्हें एरर्स आएंगे, राइट? सभी को आएंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बट एरर्स तो आने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर, राइट? अगर नहीं आए तो यू गुड हैंड ओवर राउटिंग, दैट इज व्हाट आई वुड से। वो एक बात बन गया कि फिर अभी भी कुछ टेबल बनाना है, विल गो स्टेप बाय स्टेप, एक एक दिन एक एक काम करेंगे। ठीक है, आई डिफाइन एवरी डेज वर्क, right, in the morning class, that's what I would do, so that uh, you'll get a good hold of it। ठीक है, क्लियर है? Yes, okay, okay, so I'll stop presenting, I'll stop recording।